Welcome everyone. So today we are going to solve some important questions for TCS Ninja that we can expect in the exam of TCS in 2023. So before further ado, let's dive into the question bank. And before that, I'd like to tell you something about this whole exam. So it's like one of the most sought after company in India, and you have to increase your programming logic through these questions or through other questions to crack the exam. Okay, so let's start with the first question. पहला क्वेश्चन है कि what is the difference between a function and a method? तो function function is generally piece of code. मतलब function जो होता है आप उसके अंदर के कोड को बार बार रिकॉल कर सकते हैं. बट method is something कि if if और else statements उसके अंदर होंगे जो आप बार बार रिकॉल नहीं कर सकते. वो एक बार चलेगा तो एक ही बार चलेगा. ठीक है. तो that is the difference. It's named code unlike method which is the part of the object. मतलब वो उसका पार्ट है. वो उस पूरे जो फ्लो है उसका पार्ट है मेथड. उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं. दूसरा क्वेश्चन है हमें इस कोड का आउटपुट बताना है. ठीक है. ठीक है. ठीक है. तो ये तो फेयरली इजी है. अभी क्या होगा इसमें. फंक्शन है तो उसको हम लिख लेते हैं. वैसे इतना कुछ है नहीं. आई इंटीजर हमने डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद ये फॉर लूप रन कर रहा है आई इक्वल टू 5 से तब तक जब तक कि आई लेस देन और इक्वल टू 10 ना हो जाए. एंड एवरी टाइम देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 1 इन आई एंड वी प्रिंट इट एवरी टाइम व्हेन द लूप रन्स. जब जब लूप रन करेगा तब हम उसको प्रिंट करेंगे. सो फर्स्टली व्हाट हैपेंस इज दैट आई पहली बार 5 प्रिंट होगा. उसके बाद एक इंक्रीमेंट होगा आई 6 प्रिंट होगा. एक और इंक्रीमेंट होगा आई 7 प्रिंट होगा. एक और इंक्रीमेंट 8 9 till 10 तक I print होगा. After that, what happens is I reaches 10 and if I becomes 11, then loop terminates because we already have a condition here that I has to be equal to or less than 10. It cannot be greater than 10. So answer will be 5, 6, 7, 8, 9, 10. That will be C. Let's move on to the next question. तो इसमें बोला गया है फंक्शन है and we have been passed values here. J has been declared as an integer. अच्छा. ARGB. Let me tell you about ARGB. ARGB is augmented vector. So it is a string. It is a string type object in C, and J here has been is introduced as an integer. एंड हम इन स्ट्रिंग को इंटीजर से कंपेयर नहीं कर सकते. वी कैनॉट इक्वेट स्ट्रिंग एंड इंटीजर. तो यहाँ पे एरर शो कर देगा. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. लूप इज अ स्टेटमेंट. fill in the blanks. Loop is a sequential statement. That is pretty correct. Like if, wait, case, loop, all of these are exclusively for sequential code. मतलब सीक्वेंशियल कोड आपको पता है कि सीक्वेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है तो जो जनरली प्रोसेस फंक्शन और प्रोसीजर में यूज होती है. तो
इफ, वेट, केस, लूप, ये सब जो होते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट में यूज किए जाते हैं, ये याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, so we have been given here again, we have to give the output of a code. So main, okay, so let me tell you about do. So what happens with do is that uh, we we initiate do, and we, along with initiation, we give a statement that has to be passed, that has to be mm, executed while some condition is true. While this condition is following it, this statement will proceed. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तो डू ये हो गया, दूसरा ये हो गया। सो पहले वाले में पहले ए प्रिंट हो जाएगा, आफ्टर दैट देयर इज अ ब्रेक, सो इट विल ब्रेक। उसके बाद जो आउटर लूप है, आउटर लूप में बी प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, कंडीशन ऑफ आउटर लूप जीरो हो जा रही है, the condition of outer loop is becoming zero, so it will stop the process. Let's move on to the next question. Question number 6. What is the time complexity to count the number of elements in a linked list? अच्छा, तो linked list में क्या होता है, हमें पूरी एंटायर लिंक्ड लिस्ट में ट्रांसफर्स करना पड़ता है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी of course on हो जाएगी, we have to go from 1 2 3 to the whole linked list, पूरी लिस्ट में हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। और एक और चीज लिंक्ड लिस्ट के बारे में, अ, यहाँ पे n ब्लॉक्स ऑफ कंटिन्यूस एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। If several elements are competing for same bucket in hash table, what is it called? Okay, so we know it's called collision. Now, why it's called collision? Let me explain it to you. जब more than one elements compete करते हैं same bucket के लिए in the hash table, then this condition is called collision. मतलब एक से ज्यादा elements जब सेम बकेट में क्लैश करेंगे तो उसको कोलिजन कहेंगे। उसके बाद हैश कोलिजन और क्लैश is when of data two pieces of data share the same hash value. Hash collision or clash is when two pieces of data have same hash value, have same hash value. तो हैश वैल्यू कैसे निकलती है? हैश वैल्यू इज डिराइव्ड, मतलब हैश वैल्यू को आप हैश फंक्शन से निकालेंगे जिसमें आप डेटा इनपुट डालते हैं और एक फिक्स्ड लेंथ ऑफ बिट्स रिटर्न होते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
अच्छा ये now this is quite interesting. Infix and postfix. So infix is like when operator is between the operands. A and B are operands here. इन पे ऑपरेशन हो रहा है और जो ऑपरेटर है ये इनके बीच में है. बट पोस्ट फिक्स में क्या होता है, ऑपरेंड्स के बाद ऑपरेटर होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स. सो लेट्स सी हाउ वी चेंज infix to postfix. So we have been given A plus B or C by D minus F plus A B and then close bracket. Okay, so we start from the left. Firstly, we move this over here. So it becomes D minus F plus A E and superscript. After that, we yeah. After that, we move this. We move the bracket outside. Like we bring D inside. F plus A E. After that, we remove these brackets. So it becomes, and the plus has been shifted to right side. So it becomes A B C star D and then a plus, then negative, then F plus A E and the mark. Then we again we shift this positive over here to make it after the operands. So the new equation becomes F A E R, and finally we shift negative over here too because it's between the operands. So we also shift it. So the final equation becomes, let me clear this up. Final equation becomes A B C R D slash B H slash positive F A E square plus negative. That is the final equation, and that is C. Let's move on to next question. That is question number 9. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है, ये अरे दिया गया हमें. अरे है 1 2 3 6 8 10. Okay. At what time the element 6 is found by linear search? Okay. What linear search does it goes searching every single element and counting the number or checking if the element is that or not. What we have, what we uh, passed the value to be searched, it checks every single element that it is that or not. So uh, let us put it in a box and give it keys. So it's like 1 2 3 6
8, 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5. So there are 6 elements. तो यहाँ पे पहले वन के पास जाएगा, ये 6 नहीं है तो नहीं, फिर आगे निकलेगा। 2 के पास जाएगा, वो भी 6 नहीं है, फिर आगे जाएगा। 3 के पास जाएगा, वो भी 6 नहीं है तो आगे आगे जाएगा। 6 के पास जाएगा, ये 6 है। सो एलिमेंट मिलेगा इन 4 स्टेप्स। तो आंसर विल बी फोर्थ कॉल। रिकर्सिव प्रोसेस है। तो रिकर्सिव में क्या होता है, बार बार कॉल करता है, बार बार उसको वापस कॉल करता है। तो पहली कॉल करेगा तो नहीं मिलेगा, दूसरी कॉल करेगा तो नहीं मिलेगा, तीसरी कॉल करेगा तो नहीं मिलेगा। At fourth call, we get 6. Let's move on to next question. Last question, question number 10. Which of the following is not a technique to avoid a collision? Acha, make a hash function appear random. That could be a technique. Using chaining method, that could be. Use uniform hashing. What happens with increasing hash table size is that आप टेबल साइज इंक्रीज करिएगा तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, और जो मेमोरी साइज है, अब आपने टेबल साइज इंक्रीज करा है तो जो हैश टेबल का मेमोरी साइज है हर कोलिजन के लिए, एवरी कोलिजन, फॉर एवरी कोलिजन रीएलोकेट करना होगा। सो इट इज नॉट द बेस्ट टेक्निक टू अवॉइड अ कोलिजन। हम लोग कोलिजन को अवॉइड कर सकते हैं बाय हैश फंक्शन अपीयर रैंडम मेथड और चेनिंग मेथड और इनफॉर्म हैशिंग, बट दिस इज नॉट द बेस्ट मेथड, क्योंकि मेमोरी साइज जो हैश फंक्शन का होगा, आपको पहली बात तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, और फिर जो मेमोरी साइज होगा उसको रीएलोकेट करना होगा हैश फंक्शन फॉर एवरी कोलिजन, हर कोलिजन के लिए। Thanks. To attempt more tests like these, you can navigate to Listian Learning website. The link is given in the description. आने के बाद आपको अपने एग्ज़ाम के लिए सर्च करना है, फॉर एग्जांपल TCS Ninja, here it is. तो यहाँ आने के बाद यू कैन सी यहाँ पे सबसे ऊपर क्विजेज है। यू कैन अटेम्प्ट क्विजेज डेली टू टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी एंड स्पीड। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे मॉक टेस्ट है एंड देयर आर सेक्शनल टेस्ट। सेक्शनल टेस्ट आर लाइक डिवीजन हो रखा है मॉक टेस्ट का 4 पार्ट्स में। उसके बाद लेट्स गिव वन टेस्ट एंड सी हाउ इट गोज। So first one is always free, so you can give that, and you can come here and click next, read all the instructions and get ready. After that यहाँ पे questions आएंगे, you can jump through them like solving them one by one, or after the completion of the test you can submit it and proceed. आफ्टर सबमिशन आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट मिलेगी, AIR मिलेगी, एंड यू विल सी कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं. So you'll get a score accuracy, how much is correct and incorrect, your strongest subject, your weakest subject, everything will be given here. उसके बाद अगर आपको अगर आपको फ्री टेस्ट देने के बाद और प्रैक्टिस की नीड हो, then you can buy the test series, and यहाँ पे आप IT प्लेसमेंट पेपर पे जाएंगे तो यहाँ पे we have multiple of them, जैसे IBM, Wipro, Infosys, HCL, Ashok, Accenture, every company has been covered by us. तो यहाँ पे you can buy this 365 days package, and since you are watching this video, तो हम आपको एक special discount देंगे, TCS 20. You can apply this on TCS exams and get 20% discount.